Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to a GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to a GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 7 of our GK syllabus. Okay, and we have already done some of the chapters of the same unit number 7, that was sports. Okay, so this is the name of the unit, that is sports. So all the chapters in that unit were related to the sports only. Okay, so now today we are going to start with one more chapter of the same unit. Okay, so the next chapter from the same unit is guess the game. This is the name of the topic, that is guess the game, given at page number 45. Okay, so all of you just open your books at page number 45, that is guess the game. Okay, so I'll just write the topic on the board, that is guess the game. So what is the meaning of this guess the game? Guess the game का meaning क्या है? So the meaning of this topic is, okay, the page number is also given. Okay, sorry, I forgot to write it. Page number is 45. Guess the game. What is the meaning of this? So the guess the game means, okay, so there are certain clues about the various games is given, and you have to find out the name of the game by अंडरस्टैंडिंग दोज क्लूज. तो बहुत सारी गेम्स के यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं, उनके बारे में एक छोटे छोटे क्लूज दिए हुए हैं, और उन क्लूज को समझते हुए यू हैव टू गिव द नेम्स. ओके, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द गेम्स. ओके, सो कौन सी गेम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे ऑफ द सेम गेम, एंड यू विल कंक्लूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट विच गेम. सो हियर नेम द स्पॉट described in each clue. Pick the answers from the help box. Okay, starting with the first one. This sports require using a bow and an arrow. A person who is an expert in this sports is called a toxophilite. Okay, so the sports we are talking about, this sports needs a bow and an arrow. Okay, for playing that sports you need a bow and an arrow, and the person who is expertise in this game, जो person उसमें जो player उसमें expert है, उसको क्या बोला जाता है? He is known as toxophilite. So the person who is expert in this game is known as toxophilite. So here we are talking about archery. Okay, so here we are talking about the archery. So what is archery? जिसको हम बोलते हैं धनुष बाण. Okay, so you have seen, आपने जो पुरानी जो stories वगैरह होती हैं, जो जो पुराने टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, यूज़ दिस बो एंड एरो यूज़ करते थे. जैसे भगवान श्री राम की बात करें, सो ही यूजेस दिस बो एंड एरो टू किल द एनिमीज और किल द पर्सन्स और किल टू वट एवर. ओके, सो दिस इज़ द बो एंड एरो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो यू मस्ट हैव सीन, जब हमारा एनुअल डे फंक्शन हुआ था, तो जो स्टूडेंट्स दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड, the participants must have seen that archery that was being played in दशहरा ग्राउंड behind our school. जो हमारे स्कूल बगल में दशहरा ग्राउंड है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो some of the soldiers they keep practicing about practicing the archery. वहाँ पे वो archery की practice करते हैं. Okay, so archery is a game that is played with the help of bow and arrow. तो archery एक bow and arrow की help से खेली जाती है. Okay, bow means धनुष एंड एरो मीन्स बाण, जिसको हम बाण बोलते हैं. ओके, तीर भी बोलते हैं उसको. ओके, और जो द पर्सन हु इज एक्सपर्टाइज, जो ये बो एंड एरो चलाने में एक्सपर्ट होता है, दैट पर्सन इज नोन एज द टॉक्सोफिलाइट. ओके, सो दिस इज द नेम दैट इज गिवन टू द पर्सन हु इज एक्सपर्ट विद बो एंड एरो. तो जो बो एंड एरो में चलाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो जो मतलब जो आर्चरी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर नोन एज द टॉक्सोफिलाइट. ओके, so the name of the game is archery. The first game we are talking about is archery. First is archery. ARCHERY. That is archery. Okay.
Moving next to the second one. This water sport has strokes such as freestyle, butterfly, backstroke and the breaststrokes. Okay, so this the next game that we are talking about, that is a water sports. So water sports means the sports that are being played in the water. ऐसे sports, ऐसे खेल जो कि पानी में खेले जाते हैं. So those sports are known as water sports. The sports that are played in water are known as water sports. So the sports that we are talking about, the sport जिसकी हम बात कर रहे हैं, there are certain styles for playing that sport. तो उस sports को खेलने में, उस खेल को खेलने के लिए they need certain styles. There are certain styles that are being adopted और जिसके बेसिस पे गेम होती है. Okay, so they are freestyle. Okay, so number of strokes. जो ये पानी में खेलने वाला स्पोर्ट है, तो जिस खेल की मैं बात कर रही हूँ इसमें स्ट्रोक्स होते हैं. इसमें स्ट्रोक्स मीन्स मतलब दे जस्ट डू सम काइंड ऑफ सो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विमिंग. तो हम स्विमिंग की बात, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्विमिंग. तो स्विमिंग में स्ट्रोक्स लगाते हैं. सो यू हैव सीन द प्लेयर्स, द स्विमर्स, नॉट द प्लेयर्स, द स्विमर्स. जो स्विमर्स होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रोक्स लगा के पानी को पीछे धकेलते हैं सो दैट दे कैन स्विम फास्ट. So there are certain styles that are being adopted by them. So बहुत सारे styles हैं जो अडॉप्ट किए होते हैं उन लोगों ने to do so that they can perform those strokes. तो वो strokes खेलने के लिए उन्हें बहुत सारे styles अपनाते हैं. बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह जिसमें they make strokes like butterfly. Other than that, back stroke and breast stroke. So these are the name of the strokes that they use to make their body swim smoothly and faster in the water. So पानी में smoothly और तेज चलने के लिए वो अलग अलग strokes के styles try करते हैं so that they are faster than the other, ताकि वो जो दूसरे swimmers हैं उनसे ज़्यादा तेज तैर सकें. So the strokes जिनकी हम बात करें, that is the butterfly stroke, second one was breast stroke and the third one was back stroke. So these are the name of the strokes that are being adopted by the swimmers so that they can swim faster and smoothly into the water. So the name of the sports जिसकी हम बात कर रहे हैं, that is swimming. Okay, that is swimming. So you must be knowing one of the greatest swimmer, that is Michael Phelps, and he has won several medals in this, and he has उन्होंने बहुत सारे medals जीते हैं in this game. So तो Olympics में उन्होंने बहुत सारे, I'm just telling you about as we are talking about the swimming, so I'm just telling the name also. Okay, so here we are talking about the Michael Phelps. He is one of the greatest swimmer of the world. He is known as one of the greatest swimmer of the world. Okay, और इन्होंने ओलंपिक्स में, एक ही ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं इन द डिफरेंट इवेंट्स. सो ही हैज़ वॉन डिफरेंट मेडल्स in the different he has won number of medals in the different events in the same Olympics. Okay, so Michael Phelps is one of the greatest swimmer of the world. Okay, so the sports that जिसकी हमने बात की, that is swimming. So swimming is a water sports. Swimming, SWIMMING, that is swimming. So here we are talking about swimming. तो swimming की बात करें, swimming is a water sports and there are certain styles that is being adopted by the swimmers. Okay, third one. Okay, in this sports the player use wooden hammer to hit balls through rings that are fixed to the ground at different distances. So as you can see in the picture, a girl is standing here. Okay, you can see a picture, and she is holding a hammer that is made of wood. Okay, and there's a ball. You can see a red color ball is also there. So that girl is holding a hammer. जिसको जो एक stick उसने पकड़ी है उसको, that is known as hammer, and that is made up of wood. वो किस चीज़ से बनी होती है? That is made up of wood. वो लकड़ी की बनी हुई एक hammer है. Okay, and what she will do, okay, for playing this the name that we are talking about is croquet. So how you are going to play the croquet? So croquet में क्या होता है? There are certain rings. So certain rings are made. तो छोटी छोटी rings बनी होती है बेटा, and that are being fixed on the ground. तो वो ground में थोड़ी थोड़ी distance पे, मतलब same distance पे उस rings को, those rings are fixed into the grounds.
Okay, so there are certain rings that are being fixed on the ground. ओके उन रिंग्स को ग्राउंड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है. ओके एंड दैट इज एंड अगेन दैट देन दिस गेम इज प्लेड विद द हेल्प ऑफ वुडन हैमर एंड अ बॉल. तो व्हाट ऑफ इस गेम को एक वुडन एक लकड़ी के हैमर से और बॉल से खेला जाता है. हाउ नाउ द क्वेश्चन इज हाउ. सो व्हाट इज इट इन दिस कि जो हैमर होता है. ओके सो एज द बॉल इज ऑलरेडी बीइंग देयर सो व्हाट द हैमर की हेल्प से दे विल हिट द बॉल. तो वो हैमर को उस बॉल से हैमर से उस बॉल को हिट करेंगे एंड दे हैव और जो जब वो हिट करेंगे दैट बॉल शुड पास थ्रू द रिंग्स. तो उस बॉल को वो रिंग्स से पास करना चाहिए. सो वो इस तरह से उसको हिट करते हैं ताकि वो बॉल है जो पास होती रिंग से निकले. ओके सो इट नीड्स एट वेरियस टेक्निक की मतलब बॉल बाहर भी ना जाए और सारी रिंग्स इकट्ठे पार हो जाए जैसे भी. ओके सो दिस इज ऑल्सो वेरियस स्ट्रेंथ एंड टेक्निक्स टू प्ले दिस गेम. द नेम ऑफ दिस गेम इज क्रॉकेट. सो दिस इज क्रॉकेट. क्रॉकेट. The spelling is CROQUET. 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 That is croquet. Okay. Moving to the fourth one. So the next game that we are talking about, this sports is played with clubs and balls. In it, the player tries to hit the ball into a series of holes in the least number of strikes. Okay, so the next game that we are talking about, that is a golf. Okay, so जिस गेम की हम बात कर रहे हैं that is a golf and it is termed as a royal game. तो इसको एक रॉयल गेम भी माना जाता है. Okay, so the people from the royal families, they used to play this game. Okay, so what is golf? So golf, for playing the golf you need a club and a ball. So club is a stick that is being used. तो उसको क्या बोला था? क्लब. ओके सो जो क्लब जो स्टिक होते हैं जिससे कि वो हिट करते हैं बॉल को, उसको क्लब बोला जाता है. एंड देयर इज अ बॉल ऑल्सो. ओके एंड इट इज प्लेड ऑन अ ग्रास ग्राउंड. ये ग्रास की ग्राउंड के ऊपर खेली जाती है. ओके एंड देयर आर सर्टेन होल्स दैट आर बीइंग मेड ऑन दैट ग्राउंड. तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे वहाँ पे कुछ होल्स बने होते हैं ऑन द ग्राउंड. एंड द प्लेयर ही हैज़ टू हिट दैट बॉल. जो प्लेयर है उसको उस बॉल को हिट करना है विद दैट स्टिक और विद दैट क्लब. सो ही हैज़ टू हिट द बॉल विद द क्लब. ओके और जैसे वो उसको उस क्लब से उस बॉल को हिट करेगा एंड ही हैज़ टू मेक श्योर दैट बॉल रिचेज टू द होल. वो जो बॉल है वो उस होल में जहाँ पे जो सर्टेन होल्स वहाँ बने हैं उस ग्राउंड में उसके अंदर डालना होता है विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स. सो सबसे कम स्ट्राइक्स में उनको वो बॉल है जो उस होल के अंदर डालनी होती है. एंड द पर्सन हु मेक्स दैट ओके जो द पर्सन हु इज सक्सेसफुल जो ये करने में सक्सेस मतलब वो कामयाब हो जाता है. दैट ही हैज़ मेड द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स. उसने कम स्ट्राइक सबसे कम स्ट्राइक्स लेते हुए उसने जो बॉल है जो होल्स के अंदर पास कर दी है, दैट इज द विनर ऑफ द गेम. So the golf is played with the help of club and ball. Okay, and it is played on a grass ground. ये grass की ground के ऊपर खेली जाती है. Other than that, this club it is played with the club and ball that I have told you. And in this there are certain holes that are being made on that ground. तो उस ground के ऊपर कुछ दूरी पे थोड़े थोड़े जो holes हैं that is being made. And the player of the golf, the player who plays the golf is known as golfer. जो गोल्फ खेलते हैं उनको क्या बोला जाता है? गोल्फर. GOLFER. सो द पर्सन हु प्लेज द गोल्फ इज नोन एज गोल्फर. सो द गोल्फर जो गोल्फर है उसको क्या करना है? ही हैज़ टू हिट द बॉल ओके विद हिज क्लब एंड मेक श्योर दैट ही मेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक्स फॉर उस बॉल को उस होल के अंदर डालने के लिए ही हैज़ टू मेक द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्राइक. सो कम से कम स्ट्राइक्स में उनको वो बॉल को उस होल के अंदर डालना होता है. एंड आई थिंक वहाँ पे जो ज़मीन होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऊपर नीचे होती है जहाँ तक मैंने देखा है. ओके सो द गेम दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज गोल्फ. दैट इज गोल्फ. ओके दैट इज द फोर्थ वन. दैट इज गोल्फ. GOLF. दैट इज golf. Okay,
So these are the answers from 1 to 4. The first one is archery, second is swimming, third is croquet, and the fourth is golf. Clear? So let's move to the fifth one. So you can just pause it here and write it down in your notebooks. Chalo. Now moving next to the fifth one. This is a Chinese way of fighting without arms. Okay, it is also a form of exercise combined with the self-discipline. So here we are talking about a game that is Kung Fu. इसको हम क्या बोलते हैं? Kung Fu. So it is the Chinese way of fighting without arms. So which arms they are talking about? Are they talking about this arm? क्या वो हाथ के बिना पहले आर्म की बात करें? No. They are talking about the बिना किसी हथियार के. Okay, so arm means हथियार भी होता है ना, ARMS, the spelling is also same. So they are talking about the arms. Okay, so arm बिना किसी हथियार की जो fighting. So this is a Chinese way of fighting without arm. तो बिना किसी हथियार के लड़ाई करना मतलब एक way of fighting है ये. Okay, in which they don't use any arm, that any हथियार या any कुछ वो use नहीं करते. Okay, so how they fight? They just make various steps. Okay, they use their hands, they use their legs. Okay, and they मतलब जो ये that is known as kung fu, जो kung fu में है that is very smooth. I have seen, मतलब इसमें एक बहुत ही smooth way of fighting है, मतलब but it needs a quick reaction. कुछ जो आपका opponent है what he is ever doing, तो आपको उसको quick reaction देना होता है. Okay, and it is very dangerous if someone, वो एक कहते हैं ना एक हाथ भी लग जाए so वो ढेर हो जाएगा. So this is very strong way of fighting. Okay, and but it is without arms only. Okay, and this kung fu also teaches the discipline. This kung fu is also teaches the discipline, self discipline भी आप is also part of this kung fu. Okay, the person who learns, so this needs this kung fu, the person who is doing this kung fu, he needs to be very vigilant, he needs to be very quick, he needs to be very self-discipline. So these are the terms that are being used for while they are doing the kung fu. तो kung fu खेलने के लिए बहुत ही एक they just need a smooth and constant and मतलब उनको एक बहुत ही ध्यान के साथ ही kung fu सीखना पड़ता है. And it is without the arms. The best part is that it is not, they don't use any kind of arm for playing the for this way of fighting, that is kung fu. So the fifth one is kung fu. KUNG, kung fu. Moving to the last one, that is the sixth one. So the next is parallel bars, trampoline, pommel horse and balancing beams are some of the equipments used in the various sports where one can score a perfect 10. So we are talking about one of the important games from the Olympic, that is gymnastics. So we are talking about gymnastics. So what is gymnastics? In gymnastics, they use the certain number of equipments to play gymnastics. They use number of equipments. तो अलग अलग equipments use करते हुए gymnastics खेलते हैं. Okay, so what they do, उसमें बहुत सारे trampoline. So this is the name of the equipments that are being used. So while they do the gymnastics, the parallel bars. Okay, they use parallel bars, trampoline, pommel horse, and the balancing beams. These are the different equipments that are being used. For playing this game. Okay, and in this one can score the perfect 10 also. तो इसमें जो है कि कोई है तो perfect 10 scores है, they can also score that. तो इसमें आपने देखा होगा ओलंपिक्स में ज़्यादातर ये गेम आपने देखी होगी. सो इसमें क्या करते हैं, उनके पास बार्स होते हैं, उनको पकड़ के उनको झूलना होता है. मतलब दे हैव मेड मतलब अलग अलग स्टंट्स. दिस इज जस्ट काइंड ऑफ स्टंट्स. So you can see the picture in your book as well. A girl is doing the gymnastics. Okay, and this gymnastic needs great balancing. Okay, so gymnastic करने के लिए balance is very much required, and they have to keep their weight also very मतलब उनको अपना जो weight है वो भी बहुत ही रखना होता है limited में. Okay, so this is known as gymnastic. So it just needs lots of self discipline and balancing their weight as well. Okay.
एंड इट मतलब वो अपनी पूरी बॉडी, दे जस्ट मूव द होल बॉडी. इफ यू एवर सीन एनी जिमनास्टिक, okay, so you can see that the videos on the YouTube that how that gymnastic is done. So they just move the whole body like they मतलब जैसे लगा कि उनकी बॉडी में कोई बोन ही नहीं है, तो वो इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करते हैं. Okay, and their balancing is just out of the world. Okay, so the game that we are talking about is gymnastics. The spelling is GYMNASTICS, gymnastics. Okay, so the fifth one is kung fu and the sixth one is gymnastics. Okay, so this was the topic given at page number 45, guess the game. Okay, so with this we have completed this chapter as well. Now let's move to the next topic that is given at page number 80. So all of you just open your books at page number 80, that is sports vocab. So this is the next topic that we are going to discuss, that is sports vocab. Okay, so I'll just write the topic on the board, and all of you just open your books at page number 80, that is sports vocab. Okay, the topic is sports vocab. So this is the topic given at page number 80. So what is the meaning of the topic sports vocab? इसका मतलब क्या है? So the meaning of this topic is vocab means vocabulary. Vocab means vocabulary. So there are certain words, they are related to different sports. जैसे कि अलग अलग गेम में कुछ जो वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ यूज एज देयर वोकैबुलरी. जैसे कि मैंने आपको अभी स्विमिंग के बारे में बताया थोड़ी देर पहले कि स्विमिंग में बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, सो दीज आर द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द स्विमिंग ओनली. जैसे ओके, गुगली इज द वोकैब, गुगली इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड इन द क्रिकेट. सो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग जो गेम्स हैं उनमें अलग अलग कुछ वर्ड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. ओके, so in this topic we are going to talk about some of the vocab or some of the words that are being used in the different sports. Okay, so in the book as it is given, write the name of the sports below each picture. Draw lines to match the sports term in the ladder to the correct picture. So you have to write the name of the sports. So आपको पिक्चर देखते हुए स्पोर्ट्स का नेम बताना है एंड उसके साथ उसका क्या लिखना है. यू विल राइट द नेम ऑफ द वोकैब दैट इज बीइंग यूज्ड इन दैट स्पोर्ट्स. तो ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. सो द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी, इट इज अ पिक्चर ऑफ बास्केटबॉल. सो द प्लेयर्स दे आर प्लेइंग द बास्केटबॉल. सो हियर दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल. सो द टर्म यूज्ड इन द बास्केटबॉल इज dunk, D-U-N-K, dunk. Okay, so dunk is a term that is being used in the basketball. So the name of the game is, the first one is basketball, B-A-S-K-E-T, basketball, and the term used is dunk, D-U-N-K, dunk. Second one. Okay, so now moving to the second, this is the name of the, what is the name of this sports? अभी हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया था, दैट इज गोल्फ. ओके, सो द गेम दैट यू, द पिक्चर इज शोइंग द गेम गोल्फ. तो इसमें आपको कौन सी गेम नजर आ रही? दैट इज गोल्फ. ओके, दैट इज गोल्फ. ओके, and the term that is being used, जो term इसमें use की जाती है while playing the golf is tee, that is T-E-E, so this is the term that is being used while playing golf. Okay, T-E-E-T. Next,
Third, okay, so here a player is preparing for a kick. Okay, so he is playing football. So the game is football. Okay, so the third picture is of which game? It is showing the game football. 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 Okay. And what is the term? What is the vocab that is associated with the football given here is that is penalty kick. Penalty kick आप जानते होंगे जब दूसरी opposite team कोई ऐसे तरह का एक्शन करती है, दैट इज जो कि अगर कोई opposite team आपके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन करती है जिसकी वजह से उनको एक पेनल्टी मिलती है ऑपोजिट वाले को, उनको एक फ्री का स्कोर करने के लिए मिलता है बॉल, दैट इज नोन एज पेनल्टी किक. PENALTY penalty kick. KICK, that is penalty kick. Okay, moving to the fourth one. So in the fourth picture you can see it is billiards. Okay, so billiards है इसमें की that is played with the help of ball and a long stick on a rectangular table that is having certain holes on it, and I think near about 9 balls are there. So this is the billiards. So the game is being played on a table, rectangular table. So the fourth picture is of which game? That is billiards. BILLIARDS, that is billiards. Okay, so the fourth picture is of billiards, and the term related to the billiards is frozen ball. Okay, that is frozen ball. FROZEN, frozen ball. Okay, so the name of the game is billiards and the term related to it is frozen ball. Clear? So these are the answers from the first 4. You can just pause your videos here and write it down in your books. The first one is the basketball and the term related to the basketball is dunk. Second is golf and the term related to golf is TEET. Third is football and the term related to football is penalty kick. Last is billiards and the term related to the billiards is frozen ball, that is frozen ball. Clear? Now moving to the next one. That is the fifth one. So the fifth one is so fifth one is cricket. So you can see the picture of the game, that is cricket. CRICKET, that is cricket. Okay, तो किस गेम की हम बात करें? We are talking about cricket. So the vocab or the term that is related to the cricket is googly. Googly is the form of a ball जो bowlers करते हैं, that is googly. GOOGLY, that is googly. Okay, this is googly. Last one. So in the last one you can see the player, he is servicing in the lawn tennis. So the last, okay, he is playing lawn tennis. So that is a lawn tennis. So the last game is lawn tennis. Next one is lawn, LAWN, lawn tennis, TENNIS, lawn tennis. Okay, so this is the name of the game and the term related to lawn tennis is ACE. That is ACE. Okay, so these are the answers from 5 and 6. Fifth one is cricket, term related is googly. Sixth one is lawn tennis and term related to lawn tennis is ACE. Okay,
So with this we have completed this chapter as well, that is given at page number 80. Okay, I think now we have completed the unit also. No, there are some topics still left. Okay, so we are going to do that one also. Okay, so with this I'm just ending the session here. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.